So hey guys, welcome to another vlog, and today I am going to ship my Insta360 One X. Hold on. So I'm currently vlogging with my GoPro Max because it's raining heavily. जब भी अरियंदर को मिलना होता है ना, जॉर्जिया टेक में मिलने जा रहा हूँ तो बारिश हो जाती है बहुत तेज़. आज फिर से अरियंदर को मिलना बहुत excited हूँ. I'll show you guys his apartment, but before that I sold my Insta360 One X camera क्योंकि मैंने नया 360 कैमरा खरीद लिया. And I'm super glad कि मुझे प्राइस बहुत अच्छा मिला और मुझे GoPro Max अब सिर्फ $100 का पड़ रहा है. Shit यार, मेरा अम्ब्रेला गया. Yeah, so straight now. So I'll see you there. So I just shipped my camera, and you won't believe that I bought Insta360 One X like 4 months ago for $470, and now I'm able to sell it successfully. और GoPro Max मुझे उससे भी सस्ता पड़ा, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. So finally reached Midtown station, and now I'll be seeing Ariander anytime. So finally reached the North Avenue apartments at Georgia Tech. So मेरे भी काफ़ी फ़नी एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब मैं ऑन कैंपस रहता था. फॉर एग्जांपल, एज यू गाइस नो, मैं कभी भी किसी इंडियन रूममेट के साथ नहीं रहा. मतलब इन द लास्ट 3 years कभी भी यूएस में नहीं रहा. इंडिया में रहा हूँ पर यहाँ नहीं. तो मतलब एक बार मेरा रूममेट फ्रांस से था, उसे कॉकरोच कहना नहीं आता था. मुझे फ़ोटो कॉकरोच के दिखा के कहता था बाथरूम में कॉकरोच है. सो इट वॉज रियली फन. सो इट इज़ ऑलवेज वर्थ लिविंग इन ऑन कैंपस हाउसिंग, बट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई अपार्टमेंट एट ऑन कैंपस वॉज $750, बट यहाँ पे मेरे ख्याल 1000 to $1200 पर मंथ है. पर जीएसयू में इतने महंगे जाते हैं, पर मैं सबसे सस्ते ऑन कैंपस हाउसिंग में रहा था बैक इन माई फर्स्ट ईयर. In this on-campus housing, there are 4 buildings. One is here, and 2 are on the back side. But still, Georgia State University wins in on-campus housing apartments because the biggest on-campus housing building is Commons at Georgia State University, which is biggest in the South America alone. So that's bigger than this. Yeah, I mean South of America. So finally starting with the apartment tour. So the moment you will enter this apartment, hi Arinder. Hello everyone, your boy is back. How's it going? Yep. So it is pretty organized, और kitchen मेरे ख्याल से उतनी है जितनी मेरी है. So comparison नहीं कर सकते, but it is pretty good. Well, I mean, it's not organized but yeah, we can look at it. We got the sink full of utensils, the stove on clean, kettle, toaster oven, because my roommate wanted a toaster oven because he used that at home, but that's kind of stupid. Coffee maker, compartments for everyone. We share like one for each. A microwave, and then the refrigerator. Okay. So yeah, it's pretty packed, as you guys can see. Wow, it is much bigger than mine. The thing is, majority of the stuff we don't eat. Like, it's kind of weird to think, but a lot of stuff goes in the trash can because of the mismanagement of food. Oh, so that's a pretty common thing at tech. Oh, cool. Yep. And if you want to show your viewers how clean we live here at Tech and how organized our culture is, there is an accurate reflection of that. Right, moving on. So here we got in the common area, or as many people say, lounge in the United States. We got couches, a common table, another table under which we store our grocery bags for no reason, and then a round table where all of us eat food when we are in the apartment. Cool. And the view over there is just amazing as compared to my apartment, and also like our apartment is off campus, so it is not furnished. The on campus था मेरे जॉर्जिया में, वो भी furnished था, ऐसे ही था. So we have we have the famous Georgia highway, interstate highway I-85, and they're like, it's so noisy all day. And then we got the famous Pencil building, AT&T headquarters, and then we also got the great Atlanta skyline if you want to show them. That doesn't count. Skyline is there. Let's see. So moving on now, we'll be going to the room. Unfortunately, I'm not going to film my roommate's room, but you got to do what you got to do. So here it is. We got the desk and a dresser, which I combined so that I can get more surface area. I got my monitors, laptop, keyboard,
a chair that I bought, which was a good investment, I believe. And yeah, so that's and we got our closet with all my clothes organized, which is pretty good. And then we got 4 suitcases on the top, and that's pretty typical of any international student. True. Yeah, and moving on, we got the whiteboard, because as a CS student, as a second year CS student, you should realize that whiteboard is something really necessary, because all the interviews are on whiteboard. Moving on, I have my little poster here, which somehow stick on the wall, because these walls are really bad, and they have like intentionally painted it such that you can't stick anything, but I somehow did it. And moving on, there's a great view from my room. Yep, absolutely. So as it is on campus housing, तो सब कुछ furnished था except chair खरीदनी पड़ी अरिंदर को, and other than that it is really cool apartment. और जो मेरा on campus था उसमें difference था कि 2 बेड थे, तो शेड था, मुझे बंक बेड पे हमेशा सोना पड़ता था, बट ही डजंट हैव एनी ऑप्शन, तो उसे बंक बेड पे ही सोना पड़ेगा. मेरे पास 2 थे, एक दूसरे रूममेट के लिए नीचे, एक ऊपर था. तो बाकी रूममेट्स का भी मतलब ये 4 बेडरूम अपार्टमेंट था, बाकी रूममेट्स का भी ऊपर ही है ऐसी अपार्टमेंट. नहीं, तो वो क्या करते हैं कि मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो, इसकी एलिवेशन. आप इसकी देखो, इसकी एलिवेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हो. तो मैंने अपना मतलब स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे अपना डेस्क डाल दिया और ये ऊपर कर दिया. पर मतलब वो क्या करते हैं, उसको नीचे कर लेते हैं और इसको यहाँ रख लेते हैं, तो आपको ऐसे चढ़ना नहीं पड़ता, पर बेसिकली आपका स्पेस कम हो जाता है. यहाँ पे इतना खुला एरिया, तो स्पेस काफ़ी कम है, वो तो है. तो यही. और यहाँ पे अपार्टमेंट की कॉस्ट एग्जैक्टली $1,200 पर मंथ है, और सेमेस्टर की कॉस्ट है $4,800, तो 4 महीने का इतना खर्चा होता है. फूड मील प्लान इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. और मतलब anyone who is at Georgia Tech or who's coming to Georgia Tech, don't buy a meal plan. It's terrible, it's way expensive, and the food is just like really bad. Like this is like something that all tech students agree on. So yeah, same at Georgia State, don't buy but it. Here's the deal. That's like bad according to American standards, right? When like someone comes from India, we like it really much because the college food is amazing. But after like first year, you realize that it's trash. True. So Absolutely agree. So talking about this apartment in 360, तो एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ऑन कैंपस हाउसिंग 2 तरह की होती है. एक होती है जिसमें किचन होता है और मील प्लान नहीं होता, और दूसरी होती है जिसमें किचन नहीं होता पर मील प्लान होता है. तो वो भी थोड़ी सी महंगी पड़ती है, पर उसका नुकसान ये है कि आपको अगर घर में फ्रिज में थोड़ा बहुत सामान रखना है वो भी नहीं रख सकते. बट अदरवाइज इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम लाइक दिस अपार्टमेंट. एक ही रूम होता है, बस किचन नहीं होता. आप एंटर करते हो, सीधा इस रूम में जाते हो और किचन नहीं होता. सो दैट्स अ कॉन. तो मेरे फ्रेंड को किचन के लिए मतलब फ्रिज खरीदना पड़ा था. इस कारण मैं सबको यही रेकमेंड करूँगा कि बाय एन अपार्टमेंट विद किचन, और थोड़ा बहुत सीरियल्स और फ्रेश फूड से काम चला लो. Big mirror and pretty good lighting. I'll say like this area is better than freshman housing, like compared to what we used to have in first year. But yeah. और यहाँ पे मैंडेटोरी था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में ऑन कैंपस में ही रहना पड़ता है, बट जॉर्जिया स्टेट में नहीं था, राइट? So you were forced to spend like $10,000 on housing alone, so it was very expensive. So this is basically the traditional typical bathroom of every college dorm housing, whatever you guys say. So, Yeah, nothing to talk about this. yeah. So this is the laundry area. The difference is कि off campus housing में जो laundry है वो inside the apartment होता है, पर यहाँ पे बाहर होता है, तो it is not that inconvenient either. यहाँ पे कोई है ही नहीं अभी common area में. अच्छा, ये थोड़ा बहुत study area to group study. So this is the first on-campus housing I've seen with gym inside the apartment as well, क्योंकि common gym हर जगह यूनिवर्सिटी में होता ही है, तो that is enough for most of the students. But ये campus बहुत ज़्यादा बड़ा है, gym 20 मिनट दूर है, so having a gym inside the apartment is really cool too. And a basketball court too, just for this apartment. So behind me is the dining hall. आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो अराउंड $2,000 पर सेमेस्टर. बहुत एक्सपेंसिव है. कितना? $2,700. मतलब GST से भी एक्सपेंसिव है, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. So that's it for the apartment tour. I know it is very expensive, but I think it is worth the experience क्योंकि I still miss my first year of college when I spent those memorable days with my roommates, amazing roommates. One was from France, another from Japan. बहुत मज़ा आता था. क्या बोलूँ क्या इसके बारे में अब इसमें.